See what is given in exercise 6.5. First question. Sides of triangles are given below. Okay. Determine which of them are right triangles. In case of a right triangle, write the length of its hypotenuse. So how we identify whether the triangle is a right angle triangle or not? How we identify whether the triangle is a right angle triangle or not? पाइथागोरस थ्योरम. ओके. तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन हमको गिवन है, इट इज व्हाट, इट इज 7 सेंटीमीटर्स, 24 सेंटीमीटर्स एंड 25 सेंटीमीटर. तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है? इट इज ऑफ 25 सेंटीमीटर. तो इसको हम लोग हाइपोटेनियस कंसिडर करेंगे. जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनियस कंसिडर करेंगे. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी हैव? बाय पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square which is equal to base square plus height square. ओके. तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करके चेक करो कि LHS is coming equal to RHS or not. If it is coming equal, that means the given triangle is a right triangle. So here 25 whole square, it should come equal to base. आप किसी को भी ले सकते हो, 7 को भी ले सकते हो, 24 को भी ले सकते हो. So 24 whole square plus 7 whole square. What is 25 square? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625. 25 का स्क्वायर होगा 625. 24 का स्क्वायर होगा 576. 7 का स्क्वायर होगा 49. तो यू विल गेट 625. इट इज इक्वल टू 625. तो इस पे से हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं? Therefore the given sides make a right angle triangle. Therefore, the given sides make a right angle triangle. With hypotenuse 25 centimeter. With hypotenuse is equal to 25 centimeters. Is it clear to you? इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे बाकी के तीनों को भी, whether LHS is coming equal to RHS or not. Okay, see the next one. Second one, which is the highest value? 386 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 8. सो हम लोग 8 को हाइपोटेनियस कंसिडर करेंगे. 8 centimeter. So therefore, by Pythagoras theorem, what we have? By Pythagoras theorem, we have hypotenuse square. It is equal to base square plus height स्क्वायर. हाइपोटेनियस है 8. 8 का होल स्क्वायर. बेस आप 3 6 किसी को भी ले सकते हो, तो हम लोग 6 को बेस ले लेंगे. और हाइट है हमारा 3. नाउ टेल मी वेदर योर LHS इज कमिंग इक्वल टू RHS और नॉट. No, it will not come.
8 square is what? It is 64. 6 square is what? 36. 3 square is what? 9. So 36 plus 9, it is equal to 45. So here it is unequal. Okay. When it is unequal, what we can say? Therefore, the triangle formed, the triangle formed is not a right angled triangle. As it is unequal here, so that's why it is not a right angle triangle. Okay, similarly, you will try this third one. Tell me the answer for this third one. It is unequal. It is unequal, correct. Okay. It is not a right angle triangle. Again, you will do the same process. Hypotenuse is equal to 100 लेंगे हम लोग, जो सबसे बड़ा साइड होता है, दैट इज हाइपोटेनियस. यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू है 100. So therefore, by Pythagoras theorem, what we can say? Hypotenuse square, it is equal to base square plus height square. Hypotenuse का square यानी 100 का square, it is equal to base का square यानी 50 ले लेंगे चलो base, और height है यहाँ पे 80. ओके. तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2,500, 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6,400. ओके. सो एडिंग दिस व्हाट वी विल गेट? 8,000, sorry 7,000, no 8,900. Yes or no? So it is unequal. So therefore it forms, this doesn't form a right angled triangle. What about the last one, fourth one? Does it form or not? Yes, it is a right angle triangle because 5, 12 and 13. Okay. It is a Pythagorean triplet. It is a Pythagorean triplet. Okay, one value I will give it to you. You check and tell me whether it is a triplet or not. Check this value. Tell me whether it will form a right angle triangle or not.
Viraj is telling no. Sushma Sohal. Who is Sushma Sohal? It will not form. Okay, इसमें सबसे बड़ा क्या है? 65 बड़ा है. What is 65 square? What is 65 square? 4225, sorry, will be equal to, फिर 60 का स्क्वायर दैट इज 3600, और 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 का स्क्वायर 1225. ऐड करके देखो भला कितना आता है ये. एंड हाउ यू आर सेइंग दैट इट विल नॉट फॉर्म? 4825 आ रहा है क्या ये? ओके, 4825. ओके, 4225 and 4825 are unequal, so that's why it will not form. Okay, fine. I will give one more triplet. Please tell me about this. 33, 44, 55. Okay, most of you are telling that it will form. How come it will form? 33 square and 44 square will come equal to 55 square. What is the shortcut for identifying this? What is the shortcut for identifying this? 3 4 5 triplet, correct. 3 4 5 ट्रिपलेट पे से तुरंत समझ में आता है इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि देखो 3 4 5 ट्रिपलेट का यूज किया है यहाँ पे, और हर वैल्यू को 11 से मल्टीप्लाई किया है. 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया है, 4 को 11 से मल्टीप्लाई किया है, और 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म. तुरंत समझ में आता है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन. ओके. Okay, second question of this exercise. PQR is a triangle right angled at P and M is the point on QR such that PM is perpendicular to QR. Show that PM square which is equal to QM multiplied by MR. Okay. So first of all, we will have to draw the figure. तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं पहले. ओके. PQR है ट्राइंगल राइट एंगल एट P, तो यानी ये पॉइंट P होगा. ओके. This is Q and this is R. Next, what they have said, M is the point on QR such that PM should be perpendicular. यानी ये जो line है PM, it is perpendicular to this QR. Okay, we have constructed the figure. Now next, what we will do? Next, what we will do? What is given to us? First, we'll write given. Okay, given in a right angled triangle PQR, angle P is equal to 90 degree. Okay. Also, what is given to us? PM is perpendicular to QR. हाँ. अब हमको ये प्रूफ करना है PM square which is equal to QM multiplied by MR. तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ PM divided by QM
which is equal to MR divided by PM. Now what is this? What does this indicate? What is it? What does this ratio indicates? It is nothing but the ratio of corresponding sides. Yes or no? It is the ratio of corresponding sides. So यहाँ पे to prove लिख लो आप पहले. To prove, what we have to prove? PM square, which is equal to QM, which is equal to QM multiplied by MR. Okay. Now we will start the proof. So now first check where PM, QM, MR is coming. See, this is PM. Again, this is QM, and MR is this is the longest side. MR, yeah, this is MR and this is QM. So which two triangles we will have to take? Which two triangles we will have to take and prove them similar? या फिर हम लोग डायरेक्टली थ्योरम 6.7 के हेल्प से भी लिख सकते हैं. ओके. QMP, QAMP and PRM, correct. Okay, so using theorem 6.7, what we can write? Using theorem 6.7, triangle RMP, it is similar to QMP. Okay, we can write it using theorem 6.7. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लेना है. अब रेशो लिखने के लिए अभी आरएमपी ट्राइंगल में देखो, मुझे बताओ 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? इट इज आरपी. ओके, 90 डिग्री के सामने वाली साइड आरपी है. वैसे ही यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? पी क्यू. ओके, नेक्स्ट. Next, what will come next? What will come next? RM upon PM will be equal to MP upon MQ. Okay. So which two ratios we will take here now? हमको चाहिए देखो ऊपर PM MQ, उसके बाद RM PM, यानी ये दोनों ही लेना पड़ेगा हमको. इसकी हमको जरूरत नहीं है. तो ये दोनों लेने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हो जाएगा PM स्क्वायर विच इज इक्वल टू QM मल्टीप्लाइड बाय MR. और यही हमको प्रूफ करना था. Okay, next one. Question number 3, first one. So the figure is also given to us. You can see the figure in the corner. Okay. Now first what we have to prove? AB square which is equal to BC multiplied by BD. Okay. AB square, it is equal to BC multiplied by BD. यानी हमको कौन से दो ट्राइंगल लेना पड़ेगा यहाँ पे? Which two triangles? Which
two triangles we will take for this first one? Triangle ABC and triangle ABD. ABC and ABD. Okay. So first one we will prove it here now. First one, in triangle ABC, as the figure is given to us, so from that we can write angle BAD. Angle BAD, it is equal to 90 degree. Okay. And again, what is given? AC is perpendicular to which side? It is perpendicular to BD side. Okay. So using theorem 6.7, what we can say directly using theorem 6.7, triangle BAC, it is similar to triangle BDA. Okay. BAC is similar to triangle BDA. Now tell me the ratio of corresponding sides for these two triangles. AB upon BD AB upon BD, equals to AC upon AD AC upon AD, हाँ, equals to BC upon AB. BC upon AB. तो बोलो कौन से दो रेशो लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? First and third. फर्स्ट एंड थर्ड. ओके, आई विल रिक्वायर ओनली दिस टू. इसकी मुझे जरूरत नहीं है. सो व्हाट आई कैन डू? ए बी अपॉन बी डी विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाइड बाय बी डी. यही मुझे प्रूफ करना था इन द फर्स्ट वन. ओके. Okay, second one, AC square which is equal to BC multiplied by DC. So which two triangles I will take it here now? ABC and ADC. ABC and ADC. Okay, correct. So using theorem 6.7, triangle ABC is similar to triangle ADC. Okay. So now what will be the ratio of corresponding sides here? AB upon AD AB upon AD, equals to BC upon AC BC upon AC, equals to AC upon DC. AC upon DC. Okay. तो आपको कौन से दो रेशियो लेना पड़ेगा यहाँ पे? This and this. Second and third. Okay, we will take second and third only. So from this what we can write? BC upon AC, it is equal to AC upon DC. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये AC है शायद से. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाइड बाय DC. यही हमको प्रूफ करना था. Okay, in the third one, sorry, in the third one, which two triangles we will take now? Triangle ACD
and A triangle ABD. ACD and ABD. Okay. So again, we will take the ratio there of corresponding sides and we will prove it. So that part is homework. Third one is homework to you. Okay. Third one, you will solve it. Otherwise, I will wait for 2 minutes. Complete that also. What happened, Viraj? Viraj. We cannot write theorem 6.7. We need to write the statement. It is very nice if you write the statement also, but using theorem 6.7. अभी theorem 6.7 हमको पता है ना क्या है. अगर आप ये theorem का use, examiner knows what is theorem 6.7. For theorem 6.7 means there is no any shortcut to mention that we are using this theorem. Okay, जैसे हम लोग ट्रिपल ए सिमिलैरिटी थ्योरम के लिए हम लोग मेंशन करते हैं ट्रिपल ए यूजिंग ट्रिपल ए सिमिलैरिटी थ्योरम. But for this 6.7 theorem, there is no any such shortcut. We will have to write the complete statement. So instead of that, we are writing using theorem 6.7. So you can mention like this using theorem 6.7. There is no need to write the statement. Okay. Yes, this is valid in exam. Otherwise, the second option is what you prove the triangle similar. That is also the option with you. Okay, you can prove the triangle similar. And after that, take the ratio of corresponding sides. अभी यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना बहुत बड़ी टास्क नहीं है. इट इज वेरी इजी. यू कैन प्रूव द ट्राइंगल सिमिलर इमीडिएटली. 2 से 3 स्टेप में. Six point seven is not the Pythagoras. 6.8 is Pythagoras theorem. Is it so in your textbook 6.7 is Pythagoras? In your textbook, theorem 6.7 is Pythagoras. It is 6.8. Okay, prove this AD square which is equal to BD multiplied by CD. Okay, next one. ABC is an isosceles triangle right angled at C. Prove that AB square which is equal to twice of AC square. Now, what do you know about isosceles triangle? क्या पता है आपको isosceles triangle के बारे में? And it is a right angled isosceles triangle. So what we can say? Two sides are equal, correct? And one angle is of 90 degree. Two sides are equal and one angle is of 90 degree because it is right angled isosceles triangle. Okay, so we will give name to this. Right angle at C. So that's why C should come 90 degree. Okay. We have to prove this AB square which is equal to twice of AC square. First of all, जो given है वो लिखेंगे हम लोग. Given in triangle ABC, angle C is equal to 90 degree. And again, what is given? It is an isosceles triangle. So what is the speciality of isosceles triangle?
Two sides are equal. Okay, so BC, it is equal to CA. So what we can write? AC, which is equal to BC. What we have to prove? To prove AB square, which is equal to twice of AC square. Okay, now proof. Okay, so which theorem we will use here now? Which theorem we will use here to prove this? Pythagoras theorem. Okay, so for applying Pythagoras theorem, we have one angle of 90 degrees. So in triangle ABC, angle C is equal to 90 degree. So therefore, by Pythagoras theorem, what we can say? पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं BA स्क्वायर इट इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. Okay, now we are having that AC is equal to BC. तो इसका यूज करेंगे हम लोग और यहाँ पे पुट करेंगे. बोलो BC को रिप्लेस करूँ या AC को रिप्लेस करूँ इन दिस इक्वेशन? चलो AC. रिप्लेस BC. ओके, BC को करते हैं तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर और इधर जो है ये BA की जगह पे आप AB स्क्वायर लिख सकते हो. AB स्क्वायर is equal to 2 times of AC स्क्वायर. यही हमको प्रूफ करना था. ओके, नेक्स्ट वन एग्जैक्टली इसका अपोजिट है अभी. ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC. If AB square, which is equal to 2 times of AC square, we have to prove that it is a right triangle. So now how we will prove that it is a right triangle? By using which theorem? कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. क्योंकि कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या देखा था कि इफ AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा अगर रिलेशन हमको मिलता है दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री आता है फिर. और एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री आने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि triangle ABC is a right angled triangle. Okay, so what is given here? First of all, tell me that. Given क्या है? In triangle ABC, AC is equal to BC. Okay, and AB square, which is equal to 2 times of AC square. This is given to us. What we have to prove? Triangle ABC is a right angled triangle. Is a right angled triangle. Okay, so here we will start the proof. Now जो given है उसका ही यूज करेंगे हम लोग. तो हम क्या given है? AB square which is equal to 2 times of AC square. Okay, फिर हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं? 2 times of AC square यानी इसको हम लोग AC square plus AC square. Okay, we can split this to AC square like this. Okay, now what is given to us? AC is equal to BC. So what we can write now?
एक AC स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अभी ये रिलेशन हमको किस में मिलता है? ये रिलेशन अगर हमारे पास होता है तो हम लोग कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी सॉरी कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी या फिर एंगल सी आएगा यहाँ पे 90 डिग्री। व्हाट विल कम 90? दिस इज ए बी hypotenuse, C will come 90, okay, not B, C will come 90 degree. So next what we can say, by converse of Pythagoras theorem, angle C will be equal to 90 degree. Therefore, triangle ABC is a right angled triangle. Is it clear to you? Any doubt to anyone? Okay.